गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम लोग का समर वेकेशन कैसे चल रहा है एंड तुम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में कैसे एंजॉय किया? आई थिंक यू ऑल enjoyed a lot and you also got the opportunity to meet our honorable railway minister sir। और अब तो समर वेकेशन में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी करना है और from the fundamental part on fundamentals of human geography I have already completed up to chapter 7, and today I will discuss with you the chapters related to the India people and economy. And the first chapter from India people and economy, it is mainly concerned with population distribution, density, population composition and growth. Of course, in India, the population distribution in India. But before going to the discussion, first we should know why we study the population of a country. Why the distribution and why the discussion of the population is very much important. And you all know that in the earlier days, human civilization were completely determined by their surrounding environment. The nature was the active agent then, because we have no technology in our hand, and for our lifestyle, for our livelihood and basic needs, everything we totally dependent on the nature. But with the passage of time, when we have technology in our hand, now we can control the nature. For example, generally desert area, it is not suitable for the cultivation of the crops, but with the irrigation facilities, now we can cultivate even in the desert area. That means now we can control the nature because we have technology in our hand. That means, of course, everything is nature and nature is very important, and the main discussion point of geography is the study of the relationship between the man and the nature, and which is changing with time and space. This relationship is changing with time and space, but nature is very important agent. But now we have technology in our hand, and we can say that nature only provides us the opportunities, but which opportunities we choose, it totally depends on us, depends on the availability of the technology and our demand and etc. So human being is very important factor, and the development of any nation, it depends on its human being. That means its human resource, and human being must be the human resource. The human resource kaun hai? The human resource means educated people who have the knowledge, the skilled people, the educated people who have the technology in their hand, and the culture. So human being are the ultimate resource of a country, and the development, economic development and development in every sphere of life of a country, it depends on its human resource. So study of population and human resource is very much important. And you know that India is the most populous country in the world after China, and according to UN report, India is going to be the most populous country in the world, and its total, even our population exceeds the population of China. And now the India's population is, in 2023, the approximate population, total population in India is 142 billion. So this huge population in India is not evenly distributed. The distributional pattern of this huge population in India is uneven. If you see in the map of India, you see that the hilly states, the Himalayan hilly states, they have very less number of population, and some states they have a huge number of population, and 76% of the total population in India is mainly concentrated in the states like Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka and Gujarat. And in spite of its vast
or large geographical area. The hilly states like Uttarakhand, they share less number of population, and Arunachal Pradesh also share less number of population. I mean to say that Arunachal Pradesh has a huge land area, but its population number is very less. Even Arunachal Pradesh shares the least population density in India. Similarly, Uttarakhand, it has a huge land area, large land area, but its population number is very less. And Uttar Pradesh has the highest population number in India, and which is followed by Maharashtra, then Bihar, then West Bengal. It means Uttar Pradesh is the most populous state in India, and the second position in Maharashtra, third position in Bihar, and fourth position is West Bengal. किसके position है ये? Number of population. That means India is the most populous country in the world, and but the distributional pattern of population in India is highly uneven. So there are some factors which are responsible for this uneven distribution of population in India. What are these factors? These factors include physical factors, socio-economic factors, and historical factors. Physical factors mean it includes the terrain quality, the soil characteristics, the climate, the availability of the water, etc. So the hilly states, northern Himalayan states, northeastern states, they have less number of population because of the terrain quality, because of the undulating topography. These are the hilly states except the Assam, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम इसका जो पॉपुलेशन है मॉडरेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नॉट लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द एलुवियल सॉइल, और यू कैन से दैट ब्रह्मपुत्र रिवर वैली. ओके, देन एंड द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, they have large number of population. What are the states of the northern part of India? Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal. All these states have large number of population because of the North Indian plains and the availability of the fertile alluvial soil and the flat land. You know that flat land is suitable for the development of the transportation system, which helps the distributional system also, and fertile soil and the flat land is also suitable for the cultivation of the crops and the industrial development and so on. Then and also the western states like Rajasthan shares less number of population because of the existence of the Thar desert here. So all these physical factors determines the distributional pattern of population in India. Then the socio-economic factors. Socio-economic factors में क्या क्या आता है ना? Socio-economic factors, it includes the agricultural development, the development of the transportation and communication, irrigation facilities, जैसे कि development of irrigation facilities in Rajasthan, industrialization and urbanization, and the extraction of the minerals and the energy resources from the mines. In case of India, जैसे कि Chotnagpur, the extraction of the minerals from the storehouse of minerals, Chotnagpur Plateau, and 40% of the minerals in India comes from the Chotnagpur Plateau. And now the historical factors. There are some places in India where, in spite of the degradation of the natural resource, they share a large number of population because of its historical background. For example, जैसे कि Vedic civilization. In the earlier days in India, Vedic civilization flourished along the river Saraswati. If you see the map, the river Saraswati flows along Punjab, Haryana, in the northwestern part of India. But in this region, today, this region consists now the modern Indian states of Punjab and Haryana, where the population number is very high. Okay, and there are also some places in India where moderate to large concentration of population is found, which were earlier which had thin population, which shared the thin population. So that we can say that the distributional pattern, spatial distribution of population in India is highly uneven. The next point is density of population. Density of population का मतलब क्या है ना? Number of person per square kilometer.
इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है 434% पर स्क्वायर किलोमीटर एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू मैन। और तुम देखो इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये एक अलग अलग जगह पर अलग अलग है, जैसे कि इंडिया इट रेंजेस फॉर वेरी लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश टू 11,297% पर स्क्वायर किलोमीटर इन द कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश जो है स्टेट, यहाँ का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है कैपिटल टेरिटरी नेशनल टेरिटरी कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, यहाँ का पॉपुलेशन सबसे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वी कैन डिवाइड इंडिया इंटू 3 डिविजन्स, जैसे कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मॉडरेट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एंड लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन सा है? इन द नॉर्दर्न इंडिया द स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दे हैव हाई density of population, and in the southern India the states like Kerala and Tamil Nadu, they have highly density of population, and moderate density of population is found in the states like Assam, Gujarat, then Andhra Pradesh, Haryana, Jharkhand and Odisha. They have moderate density of population, and the hilly states of the Himalayan region and the northeastern hilly states जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, एक्सेप्ट दी असम, दे ऑल्सो हैव लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. So we can see that the density of population is also different in different parts of India. Now the point is physiological density of population and the agricultural density of population. तो physiological density of population का मतलब क्या है? It is a ratio between the total population and the net cultivated area. And the agricultural density means total agricultural population. It is the ratio between the total agricultural population and the net cultivable area. तो agricultural population का मतलब क्या है? The population who are engaged, the persons who are engaged in the agricultural activity, मतलब agricultural laborers and their family members, or all are considered as the agricultural population. And next point in this chapter, that is the growth of the population. Growth of population we have already studied in the fundamental part. The growth of population क्या है? Growth of population means change in the number of person or inhabitant of a particular area between 2 points of time. This growth may be positive and negative. ये positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. Positive growth हो सकता है अगर plus हो, negative का population घट जाएगा तो negative growth we can say it is a negative growth. But there is a difference between growth and development. दो अलग है. The माने growth may be positive and negative, but development is always a qualitative term. इसमें quality related है. डेवलपमेंट में हर वक्त क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो इट्स अ क्वालिटेटिव टर्म. तो इंडिया का अगर हम ग्रोथ देखें, देयर आर 2 components which are responsible for the population growth in India. One is natural component, another one is induced component. Natural component के अंदर क्या क्या आता है ना? बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट. क्रूड बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ एनुअली पर 1000 persons, एंड क्रूड डेथ रेट है नंबर ऑफ पीपल डाइड एनुअली पर 1000 person. अगर बर्थ रेट से हम डेथ रेट को माइनस कर दे, जो जितना रहेगा वही तुम्हारा नेचुरल ग्रोथ है. सो वी कैन से दैट नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड death rate. But there are another component, that is the induced component, which is responsible for the change of the population growth. Or this induced component includes the migration. There are 2 types of migration, एक है immigration और एक है immigration. Move out from a place, मतलब there are some disadvantages जैसे lack of job opportunities, lack of medical facilities, water supply. So people move out from a war, political disturbances or instability. So people move out from a place in search of the better livelihood. ये क्या है तुम्हारा
एमिग्रेशन है, और इमिग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन मतलब देयर आर सम एडवांटेजेस और अट्रैक्शन विच अट्रैक्ट द पीपल into an area. It is मतलब people come into an area. It is immigration. तो emigration and immigration also are the important components of population change. So तुम्हारा एक है natural growth और एक है actual growth. And natural growth is analyzed by the difference of the birth rate and death rate. But actual growth कौन से कैसे आएगा? Birth rate minus death rate प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन अगर हम करेंगे तो इससे हमारा एक्चुअल ग्रोथ कितना है वो निकल आएगा। और इंडिया में देखा गया है द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% अकॉर्डिंग टू 2011 census, and the percentage of total population growth in a particular decade is known as decadal growth rate. And the growth rate of population in India over the last 1 century is a result of the annual birth rate, death rate and rate of migration, and it shows changing trend. That means पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है किसी कंट्री का और पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? वहाँ का बर्थ रेट, डेथ, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, सब मिला के पॉपुलेशन ग्रोथ किसी कंट्री का होता है। अब जो डिकेडल ग्रोथ है, तो डिकेडल ग्रोथ में मतलब क्या है? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए पर्टिकुलर डिकेड इज नोन एज डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दिस देयर इज ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिकेडल ग्रोथ रेट, दैट इज जी इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। P2 का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, एंड P1 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर। तो ये जो है कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड इंडिया दिस टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, नेचुरल फैक्टर्स एंड इंड्यूस्ड फैक्टर्स मतलब कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, दिस इज द फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये 4 फेजेस क्या क्या है? एक है बिफोर 1921 पीरियड which is considered as phase 1, then during 1921 to 51 period this is phase 2, then during 1951 to 1981 period this is phase 3, and then after 1981 period this is phase 4. Now what are the characteristics of the population growth before 1921 or the phase 1 in India? This period is characterized by sporadic एंड स्टैगनेंट ग्रोथ, क्योंकि देयर इज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट क्यों है? ड्यू टू द इलिटरेसी। हाई डेथ रेट क्यों है? ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ कंडीशन एंड लैक ऑफ द सैनिटेशन। द डेथ रेट इज ऑल्सो हाई। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ कोर्स it was very low during that time. Even there was negative growth rate between 1911 to 1921. Negative growth. There was negative growth rate of population between 1911 to 1921 in India. इसको अच्छे से याद रखना. And the year 1921 is considered as the demographic divide. क्यों बोला जाता है इसको demographic divide 1921 को? Because after that period population in India increased steadily. इसके बाद से population बढ़ता ही गया. After 1921, population of India increased steadily. That's why 1921 this year is considered as the demographic divide in India, and it's very important. इसको अच्छे से याद में रखो. Third phase. Now the third phase. Third phase क्या है? और इसको याद में रखो. 1921 और 1951 में और भी जो important बात है, this is the time of ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट फेज. सॉरी, देन द सेकेंड फेज. सेकेंड फेज इज 1921 टू 1951. इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बात हुई, क्योंकि देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1920s एंड ऑल्सो वर्ल्ड वॉर. यू नो दैट दिस इज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45. तो एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ. तो दिस टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड in spite of the great economic depression and war during that period. इस समय क्या हुआ ना, बर्थ रेट
crude birth rate was very high, but the death rate or mortality rate reduced to some extent because of the improved sanitation and medical facilities. अब birth rate high है लेकिन death rate थोड़ा सा reduced हो गया, तब क्या होगा? Population increase करेगा. इसलिए इस समय में in spite of the economic depression and in spite of the war, this period was characterized by steady growth of population. ठीक है, and the better transport and communication system also improved the distribution system. Now the third phase means 1951 to 1981 period. इस period में सबसे जो important बात है population explosion. This period was considered by the population explosion in India, क्योंकि इस समय में birth rate also due to the improved educational facilities, birth rate also decreased, birth rate also reduced, death rate also reduced. But how then population explosion possible during that period? Try to understand. इस समय में birth rate reduce हो गया क्योंकि अब जनता शिक्षित होने लगा, तो एडुकेशन आने लगा, तो बर्थ रेट जब वो लिटरेट बना, फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट आया, उनमें अवेयरनेस आया, तो बर्थ रेट रिड्यूस्ड हो गया. डेथ रेट तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है तुम्हारा फेज 2 से, तो डेथ रेट और मॉर्टलिटी रेट ऑल्सो रिड्यूस्ड एट ए वेरी फास्टर रेट. तब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ है? क्योंकि बर्थ रेट रिड्यूस्ड but the mortality rate or death rate reduced at much more faster rate than the birth rate reduction of the birth rate. और जो सबसे बड़ी बात है, इस समय में there was the coming of refugees from the neighboring countries. The induced factor was responsible for the population explosion during the third phase. मतलब इस समय में तुम्हारा देखो बांग्लादेश से बहुत पॉपुलेशन और नेबरिंग कंट्रीज जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी सारे कंट्रीज से तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ, बहुत रिफ्यूजी का आगमन हुआ बोल सकते हैं हमारे कंट्री में. तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के लिए. दो कारण हैं. दिस थर्ड फेज में अगर पूछा जाए बर्थ रेट भी कम हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ? दोनों ही तो कम है. तुम लोग बोलोगे बर्थ रेट रिड्यूस्ड बट mortality rate reduced or decreased at much more faster rate than the birth rate. मतलब जितना गति से mortality rate डिक्रीज हो रहा है, बर्थ रेट उतना डिक्रीज नहीं हुआ. उसके साथ तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन भी हुआ, उसके साथ रिफ्यूजीज ऑल्सो केम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो दिस टाइम और दिस फेज was characterized by population explosion in India. Now the fourth phase means after the 1981 से till today. इस समय में क्या होना? ग्रोथ रेट रिमेन्ड हाई बट स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली. अब देखो बर्थ रेट तुम्हारा जो डेथ रेट तो रिड्यूस्ड हो ही गया है, बर्थ रेट भी अब जल्दी बहुत फास्टर रेट में रिड्यूस्ड होने लगा, क्योंकि अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्लानिंग, बिकॉज ऑफ द developed condition of the women, especially the concept of women empowerment, education, female education, and increase in the age of marriage. ये सब कारण रिस्पॉन्सिबल है हमारा. और पॉपुलेशन जो जितना पॉपुलेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है. लेकिन अभी फोर्थ फेज में यही हुआ है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसका कंडीशन थोड़ा सा अलग है. देखो अभी तो अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इसके इंडिया में तो पॉपुलेशन कंट्रोल है, फैमिली प्लानिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट में है, और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी हुआ है वुमेन विच ऑल्सो प्रमोट्स द वुमेन एम्पावरमेंट. लेकिन चाइना से हमारा पॉपुलेशन क्यों बढ़ गया, इसका बहुत सारे कारण है. इसको फिर से दूसरा वीडियो में हम एनालाइज करेंगे. और हम कह सकते हैं चाइना में पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया. इतना कंट्रोल है तो हमारा कंट्री में नहीं हुआ है. उधर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया गया. एक से ज़्यादा वहाँ पर 1 चाइल्ड फैमिली प्लानिंग है, हमारे यहाँ तो 2 है.
तो बहुत सारे उनका जो पॉलिसी है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो कोरोना के कारण भी बहुत डेथ हो सकता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो इसके लिए तो अभी तो ये ज़्यादा सा कुछ दिन बाद ही डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इसका कारण और भी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका कंडीशन तुम जब स्टडी करोगे तुमको फोर फेज में स्टडी करना है। एक है बिफोर 1921, दैट इज़ फर्स्ट फेज। एक है सेकेंड फेज, मतलब द टाइम बिटवीन 1921 to 1951, देन द थर्ड फेज 1951 to 1981, देन द फोर्थ फेज आफ्टर 1981 टिल टुडे। तो ये है हाफ पोर्शन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम पीपल, इंडिया एंड इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किए, एक इंडिया का वाई वी स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, पॉपुलेशन के बारे में किसी कंट्री का हम क्यों पढ़ाई करेंगे, क्यों पढ़ेंगे, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ हाईली इनइवन, और कहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, दैट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। थर्ड पॉइंट है व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में पढ़ेंगे हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मॉडरेट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एंड लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया। देन physiological density and agricultural density, then the components population growth, the components of population growth, एक है नेचुरल कंपोनेंट, एक है इंड्यूस्ड कंपोनेंट, इसमें आएगा बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। डिकेडल, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिकेडल ग्रोथ रेट, देन द फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, एंड देयर आर 4 phases। तो these all are about the half portion of the first chapter. The remaining portion of this is a very vast chapter. Your first chapter, People, India and Economy, it's a very vast chapter. It cannot be completed in one video. Okay, in the next video I will discuss with you about the remaining portion of the first chapter, which is mainly concerned with the regional variation in population growth, population composition in India, इसके बाद linguistic composition, religious composition, composition of the working population, about India's working population. So all these points we have to cover in the first chapter, which I will discuss with you in the next video. Okay, chalo, bye.